Hello students, I hope you all are fine at your home. So this is the last part of our chapter 3. So this is the part 3 of our chapter Windows 10 customizing and personalizing. Okay, so let's start. As I told you earlier, so this is the third part. So next topic is settings app. Settings is the Windows app that you use for customizing and configuring many aspects of your Windows system. Many of the customizing tasks are performed using the setting apps. आप सेटिंग्स एप्स यूज़ करके अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा आप कंप्यूटर को अपने व्यू चेंज कर सकते हो. लाइक फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, start menu will open and click on settings. The setting app will appear. I will show you. So this is our desktop and then click on start button. Here is setting and now you can see the screen. Okay, so next is navigate the settings app. Click on any category. The settings app will display the categories. I will show you on a computer. So click on a tab. You can use the controls on the right side of the app window to modify the tab settings. Windows will apply the new settings. You can click back button on the top left corner if you need to return to the previous setting screen. I will show you. Wait. See, for example, I have clicked on system, then display, and now I want to night light on, then it will change. Okay, off. I can change anything as my choice. Okay, so based on that we can change the things. Okay, नेक्स्ट इज चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड. अब हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं? यू कैन मेक योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड मोर ब्यूटीफुल बाय चेंजिंग इट्स वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. द बैकग्राउंड इमेज दैट अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर्स. ओके, हमें वॉलपेपर्स काफ़ी सारे दिखाई देते हैं. वी कैन यूज़ एनी वॉलपेपर एंड वी कैन सेट एज आर डेस्कटॉप बैकग्राउंड. यू कैन इवन पुट योर ओन चॉइस पिक्चर और अदर पिक्चर्स provided by Windows in your computer. So how we can change? Click on start button. I will show you in a practical. Okay, these steps I will show you in a practical. So here firstly I will click on start button, then settings, then for changing the background of desktop I will go in personalization. Then you can see here is options are background. Okay, background picture, then choose picture and choose a fit. Okay, so till here I told you the steps. Click on down arrow and choose a fit and then click on one of following position. Here are the options: fill, fit, stretch, tile and center. I will tell you one by one. Fill. If we select the fill option, it display a single copy of the image, extend on all sides and keep the ratio of width to height the same. इसमें क्या होगा? एक सिंगल ही कॉपी होगी इमेज की और जो सभी साइड पे क्या हो जाएगी, क्लियरली आपको शो होगी, डिस्प्ले होगी और इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज फिट ऑप्शन. इट डिस्प्ले अ सिंगल कॉपी ऑफ इमेज एक्सटेंडेड अंटिल विड्थ ऑफ द पिक्चर फिट्स विड्थ ऑफ द स्क्रीन और हाइट ऑफ द पिक्चर फिट्स हाइट ऑफ द स्क्रीन. इसमें क्या था? सेम हाइट सेम विड्थ थी, बट यहाँ पर क्या होगी, जितनी आपकी स्क्रीन की हाइट है और जितनी आपकी स्क्रीन की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को फिट करेगी. नेक्स्ट इज स्ट्रेच. इट डिस्प्ले अ सिंगल कॉपी ऑफ द इमेज एक्सटेंड ऑन ऑल साइड्स टू फिल द एंटायर डेस्कटॉप. ये पूरे डेस्कटॉप पे आपकी पिक्चर को क्या कर देगी? स्ट्रेच. टाइल. It display multiple copies of the image rapidly to they fill
द एंटायर डेस्कटॉप, इसमें मल्टीपल कॉपीज आपको एक इमेज की शो होगी. देन सेंटर, इट डिस्प्ले सिंगल कॉपी ऑफ इमेज इन सेंटर ऑफ द स्क्रीन. सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमें उस इमेज की जो इमेज है वो हमें शो होगी डेस्कटॉप पर. ओके, आई विल शो यू इन अ प्रैक्टिकल. द प्रीव्यू ऑफ सेलेक्टेड पिक्चर अपीयर हेयर, आप देख भी सकते हो. क्लिक ऑन क्लोज button. In this example we choose fill position that I will show you in a practical. Okay, so as I open this, so this is the my background desktops. There are the so many umbrellas on my desktop. So now I will change the picture with this. See, you can see change is done. Now I will show you steps. See, here are fill, fit, stretch, tile, center, and span also is there, but spanning is not in your book. So now fill already selected. Next is fit. See, आप देखेंगे कॉर्नर से ब्लैक लाइन आ गई है. This is the fit. I will show you again. If I use fill, see, complete screen आपकी fill हो गई. नीचे एक black line है, that is task view, task bar. Next is fit. See, black lines both the sides. Next is stretch. Stretch में complete आपकी picture क्या हो गई है, stretch. Next is tile. See, so there are only some minor changes in all these. And center, so this image is already very big, so you cannot see the changes. So I will select fill and I will click on close button, and you can see the background of the desktop is changed. Next is changing the color scheme. You can personalize the start menu in the taskbar by tweaking the colors. Click on start button to open. That I will show you in a practical. Okay, and you will see the changes. Okay, I will show you. So firstly we will click on start, then settings, then personalization, then colors, and scroll down the colors. And by default Windows is automatically picked accent color from your background. Choose any color from the palettes, and below the palette you can extend your color choice to the start menu, taskbar, and action center. This is the another option to turn on transparencies for all these items. Click on the start button to see the color effects in start menu. I will show you. So now I am showing you in a practical. So firstly click on start, and then settings, and then personalization, and then go on color, and you can see here colors go down, and here you can see the colors. For example, I am selecting the color green. Okay, so you can see, now you can see, if you click on start button, the color is green. You can see settings, and you see the background. See, here is the green color, here is the also green border, here is the transparency is black, sorry, green, here is green, all the blank spaces are
green. Okay, so now go back, see, all are the icons in green color, you can see. So this is how you can change colors. Setting a theme. Next topic is, instead of setting the desktop background and color scheme individually, you can change all of these at once by applying a theme. आप थीम से एक साथ ही कलर भी चेंज कर सकते हो, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी. कैसे? ईच थीम ऑल्सो इंक्लूड्स इट्स ओन सेट ऑफ डेस्कटॉप आइकन, साउंड इफेक्ट एंड माउस पॉइंटर. तो हमारी क्या होता है, एक थीम में ही हमारे पास अलग अलग चॉइसेस होते हैं. एक थीम में हमारे पास डेस्कटॉप आइकन्स भी होते हैं, साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं, माउस पॉइंटर भी होते हैं. जो आपको अच्छा लगे यू कैन सेलेक्ट. लाइक हाउ वी कैन डू, क्लिक ऑन स्टार्ट, देन सेटिंग्स, देन पर्सनलाइजिंग, देन क्लिक ऑन themes. You can click on these buttons to create your custom theme and then save it. Scroll down and click on theme you want to use. Windows 10 applies the theme automatically. You can see the immediate effect on the desktop and click on close. I will show you in a practical. So now I am showing you. Firstly click on start, then settings, then personalization, then here is theme, and you can, from here you can change the background. Okay, background and color. If I want to change, color, then I will select red color. Then I can change sound effects. Sound I want to use as Windows by default. And for example I change mouse cursor. For example here are so many mouse cursors are there. If I, for example, I want to use this one, so, and then okay, and then close. So here you can see, the changes, background change. Okay, so this is how you can select one theme and you can customize your computer. Okay, our next topic is adjusting the volume. If you are listening an audio or watching a video file, you can adjust the volume up or down to the set its audio just right. How? In a taskbar, click on volume icon. The volume windows appear. Click and drag the slider to set the volume level that you want. Windows set the system volume to the new level. I will show you. So here I will show you. So this is the button, and here now its volume is 8, 20 I have done, and then okay, so volume is changed. Do you know, a theme includes a whole range of changes such as a new background, taskbar and start menu customization all rolled in one. आप थीम में ये सब भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अपडेट योर नॉलेज. यू कैन डाउनलोड मोर थीम्स बाय क्लिकिंग ऑन गेट मोर थीम्स ऑनलाइन. आप और भी बहुत सारी थीम्स डाउनलोड कर सकते हो थ्रू गेट मोर थीम ऑनलाइन. I hope the whole chapter is clear to all of you. If you have any doubt, you can ask me personally. Thank you. Bye bye.